Agrobacterium and monocots. Monocots are those plants whose seeds contain only one cotyledon after germination. So here then you can differentiate them from dicots that contain two cotyledons. And in monocotyledons, economically most important plants are cereals like maize, wheat, and some other grasses. Although Agrobacterium, it can transform dicots very easily. But for monocots, the strategy to transform monocots, it is not, you can say that, easily available. The reason was that monocots, they release insufficient amount of phenolic compounds like acetylsaringone that can induce the expression of varied genes. तो इस वजह से स्टार्ट में जब प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टडी की गई दैट वाज मीडिएटेड बाय एग्रोबैक्टीरियम, तो इतनी अवेलेबल एविडेंस नहीं थी कि मोनोकॉट भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. इसके बाद जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक इन 1980s, scientists were able to transform certain monocots like asparagus and other plants. And mainly those plants were transformed by introducing the exudates from the wounded tissues of the potato that provide the source for phenolic compound like acetylsaringone. So initially in 1980s, AFE plants were transformed. Then during the last decade, number of plants that belongs to monocots, they have been transformed, and here the most effort was put for the transformation of the rice. Although rice transformation was carried out, but kanamycin antibiotic that was used as a source of selectable marker for the transgenic plant, it can also interfere with the cell growth of monocotyledons. So because of this reason, strategy for monocot transformation, it was modified, and some other antibiotics that don't interfere with the growth of monocots, they were introduced. Then with the passage of time, some other monocots plants were transformed, और इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स थी वो मेज की है, बार्ले है, वीट है, एंड इवन शुगर केन. तो इनको भी फिर ट्रांसफॉर्म करवाया गया बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस TI डिसआर्म्ड प्लाज्मिड. तो इसमें जो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की गई वो ये था कि अगर मोनोकाट्स के जो एक्टिवली डिवाइडिंग पार्ट्स हैं लाइक एम्ब्रियोज या कोटिलीडेंट्स, जिसमें जो सेल डिवीजन जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है, तो उसमें जो फॉरेन DNA के जो इंटीग्रेट करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो उस स्टेज के अगर एक्सप्लांट्स मोनोकाट्स के लिए जाएं तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. इसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जिसमें एसिटोसरिंगोन या फिनोलिक कंपाउंड्स हैं उसको खास कंसंट्रेशन में दिया गया आफ्टर इंक्यूबेशन मोनोकॉट एक्सप्लांट विद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, के उससे उसकी इन्फेक्शन जो है वो मीडिएट हो जाती थी. देन लेटर ऑन सुपर virulent strains of Agrobacterium tumefaciens were constructed, like the virulence of some genes like vir A, B, C, D, they were enhanced so that super virulent strains can be generated that can have high efficacy of transformation.